श्रीगौरी अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् देव्योवाच सर्वदा सर्वभूतेषु द्रष्टव्यः सर्वतो भुवि सर्वलोकेषु यत्किञ्चित् रहितं न मया विना तथापि येषु स्थानेषु द्रष्टव्या सिद्धिमुप्सिभिः स्मर्तव्या भूतिकामैर्वा तानि वक्ष्यामि तत्त्वतः वाराणस्यां विशालाक्षि नैमिषे लिङ्गधारिणि प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गन्धमादने मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथाम्बरे गोमन्ते गोमती नाम मन्दरे कामचारिणि मदोत्कटा चैत्ररथे जयन्ती हस्तिनापुरे कान्यकुब्जे तथा गौरी रम्भा मलयपर्वते एकाम्बके कीर्तिमती विश्वा विश्वेश्वरे विदुः पुष्करे पुरुहूतेति केदारे मार्गदायिने नन्दा हिमवता पृष्ठे गोकर्णे भद्रकर्णिका स्थाणोश्वरे भवानी तु बिल्वके बिल्वपत्रिका श्रीशैले माधवी नाम भद्रा भद्रेश्वरे तथा जया वराहशैले तु कमला कमलालये रुद्रकोट्यां च रुद्राणी काली कालञ्जरे गिरौ महालिङ्गे तु कपिला मरकोटे मुकुटेश्वरी शालग्रामे महादेवी शिवलिङ्गे जलप्रिया मायापुर्यां कुमारी तु सन्ताने ललिता तथा उत्पलाक्षी सहस्राक्षे कमलाक्षे महोत्पला गंगायां मंगला नाम विमला पुरुषोत्तमे विपाशायाम् अमोघाक्षी पाटला पुण्यवर्धने नारायणे सुपार्श्वे तु विकुटे भद्रसुन्दरी विपुले विपुला नाम कल्याणी मलयाचले कोटवी कोटितीर्थे तु सुगन्धा माधवे वने गोदाश्रमे त्रिसन्ध्या तु गंगाद्वारे रतिप्रिया शिवकुण्डे शिवानन्दा नन्दिनी देविका तटे रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा वृन्दावने वने देवकी मथुरायां तु पाताले परमेश्वरी चित्रकूटे तथा सीता विन्ध्ये विन्ध्याधिवासिनी सह्याद्र्याये कवीरा तु हरिश्चन्द्रे तु चन्द्रिका रमणा रामतीर्थे तु यमुनायां मृगावती करवीरे महालक्ष्मीर्उमादेवी विनायके अरोगा वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी अभयेत्युष्णतीर्थेषु चामृता विन्ध्यकन्दरे माण्डव्ये माण्डवी नाम स्वाहा माहेश्वरे पुरे छागलाण्डे प्रचण्डा तु चण्डिका मकरन्दके सोमेश्वरे वरारोहा प्रभासे पुष्करावती देवमाता सरस्वत्यां पारावारतटे मता महालये महाभागा वयोष्ण्यां पिङ्गलेश्वरी सिंहिका कृतशौचे तु कार्तिकेये यशस्करी उत्पलावर्तके लोला सुभद्रा शोणसङ्गमे माता सिद्धपूरे लक्ष्मीरङ्गना भरताश्रमे जालन्धरे विश्वमुखी तारा किष्किन्धपर्वते देवदारुवने पुष्टिर्मेधा काश्मीरमण्डले भीमादेवी हिमाद्रौ तु पुष्टिर्विश्वेश्वरे तथा कपालमोचने शुद्धिर्माता कायावरोहणे शङ्खोद्वारे ध्वनिर्नाम धृतिः पिण्डारके तथा काला तु चन्द्रभागायाम् अच्छोद्देशीवकारिणि वीणायाम् अमृता नाम बदर्यामुर्वशी तथा औषधी चोत्तरकूरौ कुशद्वीपे कुशोदका मन्मथा हेमकूटे तु मुकुटे सत्यवादिनी अश्वत्थे वन्दनीया तु निधिर्वैश्रवणालये गायत्री वेदवदने
पार्वती शिवसन्निधौ देवलोके तथेन्द्राणि ब्रह्मास्येषु सरस्वती सूर्यबिम्बे प्रभा नाम मातॄणां वैष्णवी मता अरुन्धती सतीनां तु रामासु च तिलोत्तमा चित्ते ब्रह्मकला नाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम् एतदुद्देश्यता प्रोक्तं नामाष्टशतमुत्तमम् अष्टोत्तरं च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतं स्मरेन् शृणुयाद् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते येषु तीर्थेषु यः कृत्वा स्नानं पश्यति मां नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः कल्पं शिवपुरे वसेत् यस्तु मत्परमं कालं करोत्येतेषु मानवः स भित्त्वा ब्रह्मसदनं पदमभ्येति शाङ्करम् नाम्नामष्टशतं यस्तु श्रावयेत् शिवसन्निधौ तृतीयां नथाष्टम्यां बहुपुत्रो भवेन्नरः गोदाने श्राद्धदाने वा अन्यहनि वा बुधः देवार्चनविधौ विद्वान् पठन् ब्रह्मादिगच्छति एवं वदन्ति सा तत्र ददाहात्मानमात्मना स्वायम्भुवोऽपि कालेन दक्षः प्राचेतसोऽभवत् पार्वती सामवद्देवी शिवदेहार्धधारिणी मेनागर्भसमुत्पन्ना भुक्तिमुक्तिफलप्रदा अरुन्धती जपन्येतत् प्रापयोगमनुत्तमम् पुरूरवाच राजर्षि लोके व्यजेयतामगात् ययाति पुत्रलाभं च धनलाभं च भार्गवः तथान्ये देवदैत्याश्च ब्राह्मणा क्षत्रियास्तथा वैश्याः शूद्राश्च बहवः सिद्धिमेर्युर्यथेप्सिताम् यत्रैतत् लिखितं तिष्ठेत् पूज्यते देवसन्निधौ न तत्र शोको दौर्गत्यं कदाचित् अपि जायते इति श्रीमत्स्ये महापुराणे पितृवंशान्वये गौरीनामाष्टोत्तरशतकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।